Assalamu alaikum, and this is Tariq Amin. This video is about the second part of the case study of language policy of Indonesia. In the previous video, we had discussed the first part. Okay, let's come to the situation of education in the Suharto period. Education improved in the Suharto period, participation increased. एजुकेशन जो थी वो सहारती के पीरियड में कुछ ना कुछ हद तक इम्प्रूव हुई और द पार्टिसिपेशन और द एनरोलमेंट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इधर ये मेंशन करते हैं कि द प्राइमरी फ्रॉम 72% इन 1970 टू 92% इन 1995। तो 1970 में कितने प्राइमरी में तकरीबन 72% जो बच्चे थे वो एनरोल होते थे, जो कि जिसकी तादाद बढ़ गई 92% इन 1995। तो 1995 में प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट बच्चों की एनरोलमेंट की परसेंटेज जो हो गई थी वो 92% तक पहुंच गई थी। एंड द सेम इंक्रीज वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड was also found in the secondary education as well, and it is also increased from 17% in 1970 to 51% in 1995. So we can see this high increase in this the participation of students. 1970 में जस्ट 17% थे, जो कि हाईली पैथेटिक सिचुएशन हम कह सकते हैं कि उस वक्त थी कि जस्ट 17% सेकेंडरी स्कूल तक जाते थे, जो कि बढ़ गई 51% इन 1995, जो कि काफी हद तक बेहतर हो गई थी। इस्लामिक स्कूल्स डेवलप्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर के उसी दौरान डिफरेंट इस्लामिक स्कूल्स वर डेवलप्ड बाय द स्टेट एंड मोस्ट मदरसा बिकेम डे स्कूल। जितने भी मदरसा, जितने तो नहीं कह सकते, मोस्ट मदरसा जो थे, ज्यादातर मदारस जो उधर थे वो डे स्कूल्स बन गए थे। और उनकी रूटीन क्या हुआ करती थी, they gave 70% of the week to the state curriculum। तो 70% का जो उनका वीक था, उनका टाइम ड्यूरेशन था, वो स्टेट करिकुलम पे जाता था, उसको देते थे। एंड 30% ऑफ द वीक यूज्ड टू बी गिवन टू कुरानिक स्टडी। तो 70% उनका स्टेट करिकुलम पे था, क्योंकि 30% उधर कुरानिक स्टडी पे। ओके, सिटीज मूव टू मोनोलिंगुअलिज्म। उधर जितनी भी सिटीज थी इंडोनेशिया में, ज्यादातर सिटीज जो थी वो मोनोलिंगुअलिज्म की तरफ बढ़ गई, क्योंकि शुरू से ही एक मोटो रहा था कि वन लैंग्वेज इंडोनेशियन, वन यूनिटी इंडोनेशियन, वन लैंग्वेज इंडोनेशिया। तो as a result of that campaign, that motto, different cities moved to monolingualism, so was education। जब different city monolingualism की तरफ मूव हो गई, तो सेम वाज द केस विद एजुकेशन। एजुकेशन में भी उन्होंने कहा कि we will use just one language as a medium of education, that would be the standard Indonesian or the standard Mali language। So just Mali language, just standard Indonesian, just Bahasa Indonesian language used to be used in the education। So education was also become the education was also monolingual। Outside of the archipelago, local language is used as medium of education। However, ये archipelago के बाहर जो जितनी भी आइलैंड्स थे, सॉरी जितनी भी एरियाज थे, उधर लोकल लैंग्वेज यूज हुआ करती थी। Why local language? Because the Indonesian language wasn't good for them as it wasn't their mother tongue। चूंकि इंडोनेशियन लैंग्वेज उनकी मदर टंग नहीं थी, इस वजह से एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करना उनके हक में बेहतर नहीं था। ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम वाज फेलिंग। हमने इब्तिदा में कहा कि उधर एजुकेशन इंप्रूव हो गई, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई, लेकिन ओवरऑल जो उनका सिस्टम था दैट वाज फेलिंग। Now we will discuss some of the reasons behind this failure of the education system in Indonesia। What were the reason? The very first reason was low wages given to different teachers। तो तनख्वाह जो दी जाती थी, जो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे जो उनको तनख्वाह दी जाती थी, पे दी जाती थी, वो बहुत कम थी। As a result of the low wages, no teachers were interested in teaching। तो कोई भी टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वेजेस जो थे वो इंतहाई लो थे, किसी का गुजारा नहीं होता था उस पे। And the other point was also no trained teachers। The other reason behind the failure of education in Indonesia was no trained teachers, क्योंकि उनके पास trained teachers नहीं थे। Poor school management, स्कूल की मैनेजमेंट जो थी वो इंतहाई पुअर थी।
करप्शन इन एजुकेशन, एजुकेशन के महकमे में बहुत ज्यादा करप्शन थी। डिसरिपेयर्ड स्कूल बिल्डिंग्स, उधर बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट फंड्स मिलते थे लेकिन करप्शन की वजह से वो हमेशा डिसरिपेयर्ड ही रहते थे। स्कूल बिल्डिंग्स की हालत अच्छी नहीं थी उस वक्त। Corruption by bureaucrats in education funds. As I discussed in the upper 2 to 3 points, that there was corruption in the education system, and corruption by bureaucrats in the education funds was also high at that time. तो high level पे उनकी corruption होती थी। एज अ रिजल्ट जब इतनी करप्शन होती है, ट्रेन टीचर्स नहीं होते, ये सारे मसाइल होते हैं, तो एज अ रिजल्ट नेशनल प्लस स्कूल्स फॉर्म। तो नेशनल प्लस स्कूल्स जो है वो बनाए गए, एंड दोज नेशनल प्लस स्कूल्स रिजेंबल्ड इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम्स इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम थे वो तकरीबन इनकी रिजेंबलेंस में आए थे नेशनल प्लस स्कूल्स। और नेशनल प्लस स्कूल्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही विद द पैसेज ऑफ टाइम। डिफरेंट पेरेंट्स स्टार्टेड एनरोलिंग देयर टीचर्स इन their children in those national plus schools. The Chinese, this is the third point, the Chinese Indonesian under Suharto. Okay, the Chinese Indonesian जो थे उधर इंडोनेशिया में कुछ चाइनीज इंडोनेशियन लोग भी आबाद थे। तो इधर उनकी हम बात कर रहे हैं कि उस चाइनीज इंडोनेशियन जो लोग आबाद थे इंडोनेशिया में, उनकी हालत सुहार्टो की पीरियड में क्या थी। Or at the very beginning of this the period of Suharto, we discussed that he was a very rigid king. He was a very rigid king. तो उन्होंने डिफरेंट लोगों को किल किया था, डिफरेंट लोगों को खत्म किया था, मार दिया, डिफरेंट लोगों को उन्होंने इम्प्रिजन किया गया था, इम्प्रिजन किया था। तो these Chinese Indonesian actually descended mainly from traders. तो ये basically traders थे, traders से descend हुए थे। And they married local women of Indonesia living in Indonesia, and they belonged to middle class. उनका ताल्लुक जो था वो middle class से था, and they were well integrated in Indonesian structures. क्योंकि काफी ज्यादा अरसा उन्होंने गुजारा था in Indonesia, that is why they were well integrated into the Indonesian structure. They were well aware of the Indonesian structures. Linguistic shift from Chinese to Indonesian. ये हम हमेशा लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज चेंज वगैरह में पढ़ते हैं कि जब when a particular community moves to a particular land, they start using the language of that land, and they start shifting towards the language of that land. अगर एक ग्रुप है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। सेम वाज द केस विद चाइनीज इंडोनेशियंस। वो जब इंडोनेशिया में गए तो उनका लैंग्वेज शिफ्ट तकरीबन कंप्लीट हो गया था। दे हैड shifted their language that was Chinese to the Indonesian language. उनका लैंग्वेज चूंकि चाइनीज ही था एट द बिगिनिंग, लेकिन उनका लैंग्वेज शिफ्ट जो था वो तकरीबन इंडोनेशिया की तरफ कंप्लीट हो गया था। उन्होंने अपना लैंग्वेज इंडोनेशियन के साथ रिप्लेस कर दिया था। हावेवर, तो इधर से आगे हम पढ़ते हैं। However, marginalized and discriminated in all social spheres. आल दो कि ये चाइनीज इंडोनेशियन जो कम्युनिटी थी वो सब कुछ का, सब चीज़ों का उनको पता था। उन्होंने लैंग्वेज भी उनकी अडॉप्ट कर ली थी, काफ़ी अरसे से रहे थे, उनके लोकल वुमन के साथ उन्होंने शादियां भी कर ली थी। बट स्टिल दे वर मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑल सोशल स्फीयर्स। लेकिन स्टिल उनको मार्जिनलाइज किया गया था, उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ करती थी, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे। they were discriminated in terms of culture, तो उनके कल्चर को भी वो प्रमोट नहीं किया करते थे, वो रिजेक्ट करते थे। लैंग्वेज जो थी चाइनीज, उनको भी कोई फोकस नहीं दिया गया था उस वक्त। पॉलिटिक्स में उनका कोई हिस्सा नहीं था। एंट्रेंस टू स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंट्रेंस टू स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज थी उनमें चाइनीज इंडोनेशियन कम्युनिटी के जितने बच्चे थे उनको एडमिशन, उनको एंट्रेंस नहीं दी जाती थी कि आप लोग एंटर नहीं हो सकते, आप लोग एडमिशन इधर नहीं ले सकते। I observed the same thing in some of the universities of Pakistan as well, where the people, the Afghan refugees, the children of Afghan refugees are not given admissions.
तो ये नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्विस में भी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती थी, पब्लिक सर्विस में भी उनको मार्जिनलाइज किया जाता था। Enforce assimilation and pressure to Indonesian names, तो उनको कहा गया था कि आप assimilate कर, enforced assimilation was there, उनको कहा गया था कि आप लोग अपने नेम्स भी शिफ्ट करें टूवर्ड इंडोनेशियन नेम्स, जिस तरह इंडोनेशियन नेम्स रखते हैं अपने, इसी तरह आप लोग भी रखें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कन्वर्ट टू इस्लाम, उन पे बड़ा प्रेशर था कि आप लोग अपने रिलीजन को चेंज कर लें, रिलीजन को इस्लाम की तरफ आए। और ये उन पे प्रेशर था, ये नहीं था कि बस उनको जस्ट दावत देते, प्रेशर था उन पे कि आप लोग कन्वर्ट टू इस्लाम हो जाएं, जो कि नहीं होना चाहिए, बजोर बाजू किसी को नहीं करना चाहिए इस्लाम की तरफ। टीचिंग ऑफ चाइनीज बैंड इन स्कूल्स, तो ये देखें एक अनदर पॉइंट इज टीचिंग ऑफ चाइनीज बैंड, चाइनीज चूंकि उनका उनकी अपनी जबान थी, एंड उनकी जो जबान थी, देयर लैंग्वेज वाज बैंड इन स्कूल्स, कहा गया था कि ये लैंग्वेज नहीं बोलनी स्कूल में। देयर शॉप्स एंड बिजनेस लूटेड, जब ये सारे काम हो गए चाइनीज इंडोनेशियन कम्युनिटी अगेंस्ट, तो दी एंड पॉइंट वाज देयर शॉप्स एंड बिजनेस लूटेड, उनके जो शॉप्स थे, बिजनेस था, वो सारा उन्होंने डिफरेंट लोग जो थे उन्होंने लूट कर लिया था। The attacks were blow to integration. This is very much important point. कि जब आप कहते हैं कि we are interested in integration, we want to unite the different people living in Indonesia, तो आप ये नहीं कर सकते कि the different minorities that are living in a particular area, the minorities that are living in Indonesia, आप उन के against different activities ऐसे कर लें कि वो मजबूर हो जाएं एक जगह को छोड़ने के लिए। तो these attacks, ये सारे attacks ही हैं। Marginalization is one attack, conversion to Islam by force is another one, pressure to Indonesian names, okay, Indonesian name, these all were different attacks. Again, this is the attack on their business and attack on their shop is the extreme of the attacks. कि उनकी attacks का result क्या था? What were the results of those attacks? These attacks were actually blow to integration. तो ये integration के लिए एक बड़ा blow था. As a result, Chinese started sending their children to China. तो एज अ रिजल्ट क्या आया इनका कि डिफरेंट जो चाइनीज कम्युनिटी थी उन्होंने अपने बच्चों को चाइना भेजना शुरू कर दिया था। ओके, दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट, पोस्ट सुहार्टो अ पीरियड ऑफ रिफॉर्म, जब सुहार्टो का एरा खत्म हुआ तो उसके बाद की पीरियड को also with the period after Suharto is also called a period of reform, where we would discuss different reforms as well. That period is called a period of reform. So first we will discuss the different presidents after Suharto, president post Suharto period. Habibie, who was the Indonesia's third president, started different reforms. However, the riots continued. Different riots हुआ करते थे उस Suharto हबीबी के दौर में। And as a result of those riots, Abdurrahman Wahid replaced Habibi. Riots different होते थे against Habibi, तो क्या हुआ कि Habibi replace हुआ किससे? अब्दुर्रहमान वाहिद से। So still riots were there, soaring inflation was there, rising unemployment was there, financial scandals arrived, financial scandals different आए। IMF halted loans, जो loans मिलती थी इंडोनेशिया को वो भी बंद हो गई थी IMF की तरफ से। तो अब्दुल वाहिद जो था वो मजबूर हो गया था कि वो रिजाइन दे दे, तो वो स्टेप डाउन एंड एज अ रिजल्ट न्यू इनका प्रेसिडेंट बन गया, जो किसी को हम कह सकते सिकारनो पुत्री स्टार्टेड द रूल, जो कि एक फीमेल थी। एंड क्रिटिसिज्म कंटिन्यूड, उस पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ ये न्यू प्रेसिडेंट पे, एंड शी वाज वाइडली रिगार्डेड एज अ वीक प्रेसिडेंट, की ये सबसे वीक प्रेसिडेंट है। In 2004, Yono replaced the above president that was who was Sukarno Putri. And in 2014, Widodo became the president of Indonesia. तो 2014 में इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट जो था वो विडोडो बन गया था। Meanwhile, ये तो just brief सी introduction थी different presidents की. Let's discuss the different reforms.
There were reforms. There were electoral reforms, and there were constitutional reforms. इसमें election में different reforms किए गए थे, constitution में different reforms लाए गए थे, and there was withdrawal by the military from its deep political involvement. इसे हार्टू के पीरियड में हमने डिस्कस किया था ना कि ये डिफरेंट आर्मी जो थी उनकी वो क्या था, मिलिट्री जो थी वो यूज करता था अपने डिफरेंट जो उनके लोग थे, कम्युनिटी थी, उनको इन्फोर्स को उन पे फोर्स उनके पास पे पावर एक्सरसाइज करने के लिए वो आर्मी को यूज करता था, पावर को यूज करता था। लेकिन उसकी पीरियड के बाद देयर वाज विथड्रॉल बाय द मिलिट्री फ्रॉम इट्स डीप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, तो उन्होंने पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में हिस्सा लेना तकरीबन खत्म कर दिया था। एंटी करप्शन कैंपेन्स भी शुरू किए गए थे कि करप्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेहल्टो की दौर में हमने देखा कि एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा वो थी, करप्शन थी, तो वो भी एंटी करप्शन कैंपेन्स भी शुरू किए गए थे। पीस इन एस एंड वेस्ट पापुआ प्रोविंसेस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे हैं इंडोनेशिया के, एस एंड वेस्ट पापुआ प्रोविंस। इनमें बहुत ज्यादा राइट्स, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, पीस बिल्कुल नहीं थी इन प्रोविंसेस में, जिसकी वजह से उनका इंडोनेशिया का जो स्टेट था वो स्टेबल नहीं रहता था, पीस उधर नहीं रहती थी। तो उधर भी अमल आ गया था इन दोनों प्रोविंसेस में। ethnic Chinese returned and established parties. Reforms का वो as a result of those reforms, the different ethnic Chinese returned to Indonesia and they established their parties. क्योंकि जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ गए थे, तो एथनिक चाइनीज के लिए थोड़ी बहुत वो एज बन गया था, मतलब रास्ता उनके लिए बन गया था कि वो पॉलिटिक्स में थोड़ा हिस्सा डाल लें, पॉलिटिकल पार्टीज बनाए। तो जब रिफॉर्म्स आ गए तो एथनिक चाइनीज डिसाइडेड टू रिटर्न टू इंडोनेशिया एंड एस्टेब्लिश देयर ओन पार्टीज। एंड IMF बेल आउट हेल्प द इंडोनेशियन इकोनॉमी रिकवर, क्योंकि इंडोनेशिया की इकोनॉमी तकरीबन तबाह हो गई थी। IMF ने अपने बेल जो थे, IMF के जो जितने भी लोन थे वो उन्होंने रोक दिए थे, लोन नहीं दिया करते थे। लेकिन जब रिफॉर्म्स आए, सेट का एरा खत्म हो गया था, तो IMF बेल जो थे वो आउट हो गए, एंड those loans helped the Indonesian economy recover। तो इनके इकोनॉमी के रिकवर में काफी हद तक ये IMF ने हेल्प दी। फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो पोस्ट सेहल्टो पीरियड में देयर वाज अ फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, के पॉवर्टी को कम से कम किया जाए एंड इनइक्वालिटी जो है वो खत्म की जाए। Multilingualism, this is the last point, that is post Suharto, a period of reform. Multilingualism, increase in national language speakers, तो नेशनल लैंग्वेज के जो स्पीकर्स थे वो 83.3% तक पहुंच गए थे 2010 में, तो काफी ज्यादा उनकी तादाद बढ़ गई थी। राइज इन स्कूल अटेंडेंस, तो स्कूल अटेंडेंस में भी हम इंक्रीज देखने को मिला कि पहले इतनी अटेंडेंस नहीं हुआ करती स्कूल्स में, लेकिन ये पोस्ट हार्टो पीरियड में इंक्रीज इन स्कूल अटेंडेंस वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड। 100% एनरोलमेंट इन स्कूल्स एट प्राइमरी लेवल, ये देखें इनकी एजुकेशन कितनी इंप्रूव हो गई थी आफ्टर सिहार्टो पीरियड, कि देयर वाज 100% enrollment in school at primary level. No longer a shortage of trained teachers. In the previous slides, we discussed that there was a lack of trained teachers. के trained teachers, बल्कि उनके teacher teaching में कोई interested ही नहीं था because of the low wages. लेकिन in the post-Suharto period, there was no longer a shortage of trained teachers. They had large number of trained teachers. Standardization of the language completed and accepted. तो इंडोनेशियन लैंग्वेज को जो उन्होंने स्टैंडर्डाइज करना था वो उनकी स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीट हो भी गई थी, और द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड बाय द डिफरेंट पीपल लिविंग इन इंडोनेशिया। जो डिफरेंट लोग उधर रह रहे थे इंडोनेशिया में, उन्होंने वो स्टैंडर्डाइजेशन एक्सेप्ट भी कर ली थी। वो जो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज था, हाई फॉर्म ऑफ इंडोनेशियन लैंग्वेज, वो लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। Indonesia did not replace the local languages. Local languages used as family languages. This is very much important point. In the previous slides, we discussed that we discussed
ये सिहाटू पीरियड में ये था कि हमारे सिर्फ एक लैंग्वेज होनी चाहिए और बाकी जो लैंग्वेजेस थे वो बैन किए गए थे कि सिर्फ एक लैंग्वेज यूज होगी और कोई कोड स्विचिंग नहीं होगी, ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम होगी उनकी वायलेशन नहीं होगी, डाइवर्जेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड नाम्स नहीं होगी। लेकिन ये पोस्ट सिहाटू पीरियड में ये चीज नहीं थी, दे डिड नॉट रिप्लेस द इंडोनेशियन डिड नॉट रिप्लेस द लोकल लैंग्वेज, उसने लोकल लैंग्वेजेस को रिप्लेस नहीं किया। The local languages were used as family languages. जो लोगों के लैंग्वेजेस थे, लोकल लैंग्वेजेस थे, वो एज फैमिली लैंग्वेजेस वो यूज किया करते थे। मल्टीलिंगुअलिज्म, जब ये ऊपर वाला पॉइंट जो है, दिस वेरी पॉइंट अबाउ पॉइंट, जब ये हम देख रहे तो हमारे जहन में डायरेक्टली आ जाता है, व्हेन यू एक्सेप्ट द डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस एज फैमिली लैंग्वेज, यू एक्सेप्ट डिफरेंट लोकल लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन लैंग्वेजेस, इट मीन दैट यू आर एट मल्टीलिंगुअलिज्म, यू एक्सेप्ट मल्टीलिंगुअलिज्म, कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। So there was multilingualism after the Suharto period, which is also called a period of reform. The different languages were used for different purposes, like the regional languages were used for one purpose, the higher language was used for another purpose, the family language were used for another purpose. So there were different languages and they had different functions to perform in the society and they have had different purpose to achieve. Regions allowed to support and promote their languages. Another very much important point. कि different regions जो थे ना, as we discussed in the very first slide, के उसके इंडोनेशिया में more than 3000 islands हैं, तो काफी ज्यादा आइलैंड्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, दे हैड डिफरेंट लैंग्वेजेस। हमने कहा कि काफी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, आई थिंक वी डिस्कस दैट देयर आर मोर देन 5000 लैंग्वेजेस, या so there were many languages and there were different regions and the regions were allowed to support, they were allowed to support their language and they were allowed to promote their languages, as उन्होंने कहा गया था कि you can support your language and you can promote your language too. More English in the curriculum, however चूंकि multilingualism आ गया था तो there was more English in the curriculum. इंग्लिश की तरफ लोग इंडोनेशिया जो था, मुल्क जो था, वो उसने तकरीबन इंग्लिश को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और हर जगह पे यूज़ होती है, तो दे एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन टुडेज वर्ल्ड। उसी दौरान उस वक्त भी इंग्लिश काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी एंड दे एक्सेप्टेड and acknowledge the importance of English language. That is why there was more English in their curriculum. उन्होंने कहा कि हम करिकुलर में भी English language को introduce कर लेते हैं. And English was regarded as compulsory subject at different levels. English language होता है जैसे we have in Pakistan, English is a compulsory language from primary till the higher classes के compulsory subject है. Similarly, in Indonesia, English was also regarded as a compulsory subject. ये compulsory subject है. To be able to graduate, this is an important point, to be able to graduate showing competence in these skills in English was mandatory. As we know that there are different skills of English like writing, reading, speaking, listening, these are different skills. अगर आपने ग्रेजुएट होना था उस वक्त इंडोनेशिया में तो उन्होंने कहा जाता कि आपको कॉम्पिटेंस शो करनी है कि आप डिफरेंट जो लैंग्वेज स्किल्स हैं इंग्लिश के उनमें आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते, अगर है तो आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। The obligatory status of English an issue for all, ये चूंकि इंग्लिश की तरफ आ गए थे काफी और उधर के जो इंडोनेशिया के लोग थे वो काफी लोकल लैंग्वेजेस यूज किया करते थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इंडोनेशियन लैंग्वेज को यूज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो है ये ऑब्लिगेटरी है, आपने सारी एजुकेशन में ये डालनी है। तो इट वाज एन इशू फॉर ऑल, इट वाज एन इशू फॉर स्टूडेंट्स, इट वाज एन इशू फॉर पेरेंट्स, इट वाज एन इशू फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। टीचर्स के लिए भी इशू था क्योंकि उनकी कमांड उतनी नहीं थी। सिमिलरली ये जो स्टूडेंट्स थे पहले वो अपने मैटरनल लैंग्वेजेस सीखते थे, उसके बाद फिर वो इंडोनेशियन जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी इंडोनेशिया की वो सीखते थे, उसके बाद जाके ये थर्ड लैंग्वेज उनके लिए हो जाती थी, ये इंग्लिश लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज के लिए हो जाती थी, इसके बाद उनको ये भी सीखना पड़ता था। मिडिल क्लास पेरेंट्स डिमांडेड मोर इंग्लिश, क्योंकि मिडिल क्लास जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को देयर इज इंक्रीज्ड कि हमारे इंक्रीज्ड
नीड ऑफ इंग्लिश, कि हमारे बच्चों को इंग्लिश की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज दे हैड इग्नोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश को लर्न ना कर सके तो वी कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड। प्राइवेट स्कूल्स फोकस्ड ऑन इंग्लिश एज मीडियम एंड एज लैंग्वेज। तो इधर ये दो चीजें हैं, वन इज इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंग्लिश एज लैंग्वेज। तो प्राइवेट स्कूल्स में फोकस किया फोकस था कि इंग्लिश एज मीडियम, कि इंग्लिश वुड बी यूज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स एंड इट वुड बी टॉट एज लैंग्वेज। एक होता है एक लैंग्वेज को एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करना, एक अलग चीज है, लेकिन एक लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज पढ़ाना इज अनदर थिंग। तो उन्होंने कहा कि वी विल यूज इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज अ लैंग्वेज, वी विल टीच इट एज अ लैंग्वेज। हायर एजुकेशन वाज मोर इन इंग्लिश। तो हायर एजुकेशन जो थी वो ज्यादातर इंग्लिश में ही हो गई थी। Okay, thank you very much. So in today's video, we discussed the case of the language planning in Indonesia, जिसमें हमने discuss किए this where we discussed Sukarto period. After that, we discussed Suharto period. After that, we discussed post Suharto period, where we discussed different reforms, जिसमें हमने different चीजों को touch किया. So thank you very much. Allah Hafiz.